ठीक है, वापस आते हैं। तो आप क्या कहते हैं, मैं ये कह रहा था इन्होंने सिलेबस में लेटेस्ट स्ट्रक्चर पहले रखा हुआ है और बाद में आयनिक बॉन्ड समझा रहे हैं। तो हम पहले आयनिक बॉन्ड कर लें, बाद में इसमें आते हैं। Yes, sir, it's fine. ओके, तो इसको मिटाते हैं। इसमें एक पॉइंट लिख लेते हैं, चार्ज ऑफ द आइन, चार्ज ऑफ एन आइन कैन बी फाउंड by finding the difference by finding the difference between number of electron and proton. For example, here we have 13 minus 10 is 3, so the charge is 3. Here we have 20 minus 18, charge is 2. 11 minus 10, 1, charge is 1. Similarly, here 17 minus 18 is equal to minus 1. Here 8 minus 10 is equal to minus 2. Here charge is 15 minus 18, so charge is minus 3. So proton minus electron is charge. Charge is equal to number of proton minus number of electron. Number of electron. बोले यहां तक बात समझ आ रही है? Yes, sir. Okay. Now ionic bond. Or type of bond. Types of first bond. Yes, what is bond? Yes, what is chemical bond? Can anyone explain what is chemical bond? Sir. Sir, when there's like a force of attraction between two atoms, the molecules. Very good. Force of attraction. This attraction is called electrostatic force of attraction between two elements in a compound is called bond. Chemical bond. Let's suppose this is A. A attract B. So this attraction is called bond. Why they attract? Let's suppose this A has electron and this B has positive nucleus. So the nucleus attract electron. Similarly,
This A has positive nucleus. So these electrons are also attracted by nucleus of A. This attraction is called bond. Are you getting this point? Yes, sir. For example, hydrogen. Hydrogen has one proton, one electron. Similarly, another hydrogen has one proton and one electron. This proton is attracted by this electron. This proton is attracted by this electron. This is called chemical bonding. But sir, how is it attracted? You know that electron carry negative charge and proton carry positive charge. So they attract, oppositely charges attract. Okay. Now types of bond. In your syllabus, you have ionic bond. You have covalent bond. You have metallic bond. Ionic bond. Number 2. Covalent bond. Number 3. Metallic bond. Metallic bond. First is ionic bonding. Yes, beta, what is ionic bonding? When two ions bond together. Sorry? When two ions bond together. When two ions combine together. Very good. Very good. So this type of bonding take place between oppositely charged, and you are right. So first point is the bonding between oppositely charged ion. Oppositely charged ions. So ionic bonding. Next point. Ionic bonding is between metal and non-metal. Let's suppose this is metal, this is non-metal. Metal give its electron to non-metal.
So metal become positive after losing one electron, and non-metal become negative. This attraction is called ionic bonding. This line show attraction. This is ionic bonding. ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है बोले? सर मुझे समझ नहीं आया। देखें मेरी बात सुने बरीरा, ये देखें, लेट्स सपोज दिस इज सोडियम, लेट्स सपोज दिस इज सोडियम. सोडियम इज मेटल, सोडियम इज मेटल. ये देखो, ये आया पहला शेल, दिस इज सेकंड शेल, this is third shell. Now look at the electrons. Sodium has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and this is 11. This is sodium. Now look at another non-metal, which is chlorine. Chlorine has 17 electron. Chlorine has 17 electrons. Electron of chlorine are indicated by cross. बरीरा, आपको आवाज आ रही है? यस। मुझे बताइए सोडियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। सोडियम 1। 1. और क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है गिने? 7। 7. तो स्टेबल तब होगा जब आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो. तो आप प्लानिंग बनाए, हाउ सोडियम अटेन स्टेबिलिटी, हाउ क्लोरीन अटेन स्टेबिलिटी. बताइए, अगर सोडियम या इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो बताइए सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन बाकी बचेंगे आखिरी शेल में? 0। हैं? 0 कैसे? आइए देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं. ये देखें, ये देखें, गौर से देखिएगा. इससे ये बना है, इनसे ये बना है. गौर से देखिएगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया, ये गया, कहाँ आया है बरीरा? देखना, वो आया यहाँ. अब बताओ सोडियम में आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए लास्ट शेल में?
एक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलिए ये शेल भी गायब हो गया। अब बताइए 8, 8। और बताइए क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने हो गए? 8। 8। दोनों में स्टेबिलिटी आ गई। हाँ। देखिए इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। बोले बरीरा, आपको आप समझ आया नहीं आया? यस। तो ये है इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एंड क्रॉस इंडिकेट्स electron of chlorine, and this is called ionic bonding. This sodium has positive charge, this chlorine has negative charge. बोले आपको ये मेरी बात समझ आ गई? सब बच्चों को बोले? जी Yes, सर। sir. Yes, sir. So this indicates transfer of electron. Transfer of electron. This is sodium atom. This is chlorine atom. Now this is sodium ion. This is chloride ion. This is chlorine atom. This is sodium atom. Sodium atom. Ionic bond is formed. So statement is sodium react with chlorine sodium is metal or non-metal? Metal. Metals. Metal. It is metal. So sodium metal reacts with chlorine. Chlorine is metal or non-metal? Non-metal. Non-metal. To form sodium chloride. Sodium chloride. Sodium chloride. This is example number 1. Example number 1. Now look at another example. Now sodium has 8 electron in valence shell, chlorine has 8 electron in valence shell. This is called octet. Sodium has 8 electrons and chloride ion has 8 electron
in their valence shell. They are stable. Known as octet rule. Octet means 8. Octet means 8. सर Example ऊपर वो number. आयोनिक बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या आप इसे दिखा सकते हैं? Yes. This is ionic bonding. Okay, thank you, sir. Achha, next is example number 2. HCl. So this is hydrogen. This is hydrogen. Hydrogen has only one electron. This is hydrogen atom. Or leave this example. Another example is calcium oxide. Calcium oxide. Calcium has 20 electrons. This is calcium. So calcium has 20 electrons. Eight, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then it has 2 electrons. This is calcium. Now next is oxygen. This is first shell. This is second shell. Oxygen has 8 electrons. This is oxygen. Oxygen has 8 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oxygen has 6 electrons. Can you tell me the proton number of calcium? Sir, 20. Proton number of proton number of oxygen. 8. 8. 8. So 2 more. Now this one is calcium atom. This is oxygen atom. बताइए कि दोनों स्टेबल है?
No, sir. Why? Why they They are not don't, stable? they don't have 8 electrons in their outer Very shell. good, very good, very good. MashaAllah, MashaAllah. Very good. Both atoms are not stable because they do not have 8 electrons and do not follow octet rule. Octet rule. So how can they achieve octet rule? Can anyone explain? Barira, कैसे करें? बरीरा कुछ बोलो, कैसे करेंगे? सनम कैसे करें बोले? सर जो कैल्शियम के जो आउटर शेल में जो दो दो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हम हाँ, ये ऑक्सीजन एटम कर देंगे. वेरी गुड, वेरी गुड. ये दोनों इलेक्ट्रॉन आप इसको दे दें, देखते हैं अब क्या बनता है. आपने ये इसको दे दिया तो देखेंगे क्या होगा. ये 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, शेल गायब. कहाँ गए इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन के पास आ गए. नाउ दिस बिकम +2, this become -2, this become -2. Oxygen -2. So here we have +2 charge. Here we have oxygen on oxygen -2 charge. Now these are called calcium ion, and this is called oxygen ion, or you can say it is oxide ion. Now they are stable. Now calcium has 8 electron. Now calcium and oxygen both have 8 electrons and they follow octet rule, hence stable. बोले बात समझ आई है कि नहीं आई है? आगे सर. बोले बात समझ आ रही जी है? सर. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. So calcium is metal, oxygen is non-metal. So write this statement again. Now calcium, which is metal, react with oxygen, which is non-metal, to form calcium oxide.
calcium oxide. Any question? Yes, sir. Now it's your turn. Example number 3. Example 3. MgCl2. MgCl2. Now you have magnesium. So magnesium has 1, 2. 1, 2. Magnesium has 12 electrons. Magnesium has 12 electron. Now chlorine. Now chlorine. Here you have chlorine atom. Now 2 chlorine atoms. Now 2 chlorine atom. अब बताइए क्या करें? Are these two are stable or unstable? Unstable. Why they are unstable? बताएं why they are unstable? Incomplete outer shells. Very good, very good. Very good. So how can they attain stability? Yes, how can they attain stability? By transferring the electrons. By transferring their electron. How can they transfer electrons? Yes, Sir, how can they? Magnesium will give its electrons to the chlorine atoms. So how can they distribute its electron? Magnesium can give one electron to the first chlorine atom and then the second one to the other chlorine atom. Very good, very good. So this give to this chlorine atom and this one give to this chlorine atom. So this is electron transfer. Electron transfer. This is called electron transfer. Now they form ion.
Now they form ion. So how can they form ion? Look at again. This is magnesium. So when magnesium lose its electron, they become this ion, magnesium plus 2, magnesium plus 2, and then you have this chlorine ion. One on right hand side and second one is on left hand side. You have two chlorine atom, right? This is chlorine atom. This is chlorine atom. Now when ionic bond is formed between these two, first we have this. Here we have one electron of magnesium. Here we have another chlorine atom. क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा -1. आप देख सकते हैं क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. इस पर -1 चार्ज आ जाएगा. अब आप देखेंगे मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो मैग्नीशियम पे आ जाएगा +2 चार्ज. और भाई ये एग्जाम में आते हैं बनाने को, +2 चार्ज, और इस पर वापस आ जाएगा -1 चार्ज. -1. आपको मेरी बात समझ आ रही है? दिस इज कॉल्ड क्लोराइड आइन. सनम मेरी आवाज आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? जी सर. क्लोराइड आइन. Yes, sir. बरीरा, बरीरा आपको मेरी आवाज आ रही है और बात समझ आ रही है? Yes, sir. अब हम इसमें उसी तरह से लिखते हैं कि मैग्नीशियम, ये देखें, सेम सेंटेंस, वही जुमला लिखेंगे. कैल्शियम की जगह लिखेंगे मैग्नीशियम. और नॉन मेटल इसकी जगह लिखेंगे क्लोराइड या क्लोरीन, एंड फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड.
बताएं आप ये बना लेंगे डॉट एंड क्रॉस डायग्राम? Yes, sir. Please. बोले क्या आप ये डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बना लेंगे? Yes, sir. बोले अगर आप में से कोई नहीं बना सकता मुझे बताएं, मैं और एग्जाम्पल करा दूंगा। बोले बोले आप में से किसी को कुछ पूछना है क्या? दोबारा कराऊं और क्वेश्चन? यार अगर आप बोलेंगे नहीं तो मुझे कैसे समझ आएगा? Sir, जरूरत नहीं है, सही है। डू यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला? No, sir. बरीरा No, sir. ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। बस इधर लिख देते हैं कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और इसकी जगह लिख देंगे क्लोरीन। ये आ गया हाउ आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म। ये कर लिया हमने। Describe the formation of ionic bond between metallic and non-metallic elements, including the use of dot and cross diagram. Now state that an ionic compound is strong electrostatic between opposite charge ion and describe the lattice. Okay. Now ionic compounds. Now next heading is ionic compound. Ionic compounds. Yes, what are ionic compounds? Beta, ionic compounds are those compounds which contain ionic bonding. बोल क्यों नहीं रहे हो यार? What are ionic compounds? Those compounds formed by ionic bonding. Exactly. So ionic compounds, in ionic compounds, cation and anion are held together by strong electrostatic forces of attraction. Forces of attraction forming giant lattice. Lattice structure. देखिए जाइंट स्ट्रक्चर, लेटेस्ट स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं आपको, गौर से देखिएगा बेटे। गौर से देखिए जाइंट लेटेस्ट स्ट्रक्चर।
अब गौर से देखिए कैसे बन रहा है जाइंट स्ट्रक्चर। दिस इज फर्स्ट। No need to memorize this giant structure. Just look at how these structures are formed. This is called lattice. This is called lattice. Now, this is the latest structure of sodium chloride. Let's suppose this circle indicates sodium. Let's suppose here we have sodium and this is chlorine. So इसके आगे क्लोरीन, इसके पीछे क्लोरीन, इसके राइट पे क्लोरीन, इसके लेफ्ट पे क्लोरीन। नाउ क्लोरीन के आगे सोडियम, क्लोरीन के पीछे सोडियम, क्लोरीन के नीचे सोडियम, क्लोरीन के नीचे सोडियम, क्लोरीन के नीचे सोडियम, क्लोरीन के आगे सोडियम, क्लोरीन के पीछे सोडियम, क्लोरीन के नीचे सोडियम। नाउ क्लोरीन, सोडियम के नीचे 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 क्लोरीन। चलिए इसके नीचे क्लोरीन, इसके नीचे क्लोरीन, इसके नीचे क्लोरीन, इसके नीचे क्लोरीन, इसके आगे सोडियम, इसके पीछे सोडियम, इसके इधर सोडियम, इधर सोडियम, इधर सोडियम। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। ओ बोलो, बात समझ आ रही है? याद नहीं करना है, बस इसको समझने के लिए लिखा है, बनाया है मैंने। Okay, sir. जी सर समझ आ रही है। दिस इज कॉल्ड जाइंट लेटिस स्ट्रक्चर। ओ भाई, बात समझ आ रही है नहीं आ रही है बोलो। आ रही सर। सनम, आपको मेरी आवाज आ रही है? सनम Yes, sir. देखिए मैंने क्या क्या करा दिया अब आपको। ये देखें, describe the giant lattice structure of ionic compound is a regular arrangement of alternate positive and negative ions। तो इस पे लिख लेते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस, positive negative ions arrange themselves in a particular manner this arrangement
is called crystal lattice. बोले बात समझ आ रही है? Yes, sir. चलिए अब दोबारा आते हैं इधर सिलेबस में। बताइए क्या ये हो गया हमारा पहला वाला? Sir, can you give one more example of lattice structure? बेटा all lattice are the same. We just copy it again. Okay, We sir. just copy it again. दोबारा कॉपी करेंगे यही बना देंगे. So this is called lattice. अगर आप देखना चाहें तो अपने घर का कैबिनेट देख सकते हैं, घर की अलमारी का कैबिनेट देख सकते हैं, कबर्ड देख सकते हैं, उन सब में ऐसे शेल्फ बने होते हैं. बताइए डिस्क्राइब द लेटेस्ट स्ट्रक्चर हो गया. स्टेट एंड आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग लेटेस्ट बिटवीन द अपोजिट चार्ज एंड ये भी हो गया. डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड आयनिक ये भी हो गया. Describe and explain in terms of structure and bonding the properties of ionic compounds. So next is properties of ionic compounds. Properties of ionic compound. Properties of ionic compounds. Properties of ionic compounds. Yes, first is melting and boiling point. First is melting and boiling points. Melting and boiling points. बताइए आयनिक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है कम होता है? फिर ज्यादा होता है. Yes. Why they have very high melting and boiling point? It is because of the strong electrostatic forces between the alternating cations and anions, which are hard to break, which are, yeah, Okay. which need a lot of That, energy to break. yes, that's why we need a lot of energy to overcome this attraction. Melting means to break this attraction. Melting का मतलब ये होता है कि उन अट्रैक्शन को खत्म किया जाए. Boiling का मतलब ये होता है अट्रैक्शन को खत्म किया जाए. So ionic compounds have high melting and boiling points. Ionic compounds have high melting and boiling points because energy is required to overcome the strong force of attraction
force of attraction holding the ions in the crystal lattice. बात समझ आ रही है? आपको पता है why ionic compounds are solid? So because of the strong force of attraction between the ions. Exactly. Ionic compounds are solid because of strong force of attraction and high melting and boiling point. Melting and boiling point. चलो यहीं तक ही करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? इंशाल्लाह कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे और फिर इसके बाद हम इस पूरे को खत्म करेंगे 2.7 तक इंशाल्लाह. एनी क्वेश्चन? No, sir. ठीक हो गया. Sir, यस सनम. sir, I don't get the concept of why ionic compounds have high melting and boiling point. अच्छा मेरी बात सुने सनम. आपके आपके भाई हैं? कोई भाई है? जी. अच्छा आप अपने भाई से कितनी मोहब्बत करती हैं? अच्छा या लड़ती रहती हैं आप? सर लड़ती रहती हूँ. आप लड़ती रहती. आप सबसे ज्यादा अपने घर में किससे मोहब्बत करती हैं बताएं? My mother. अच्छा ठीक है. अब मैं आपकी और अम्मी की लड़ाई कराना चाहता हूँ, ठीक है? और मैं करा नहीं पा रहा. बता सकती है क्यों? Because of the strong relation. स्ट्रॉन्ग रिलेशन. तो यही वजह है कि सोडियम और क्लोराइड both attract each other. Their attraction is very very high. So a lot of energy is required to break this relationship between Sanam and her mother. Sanam is sodium and mother is chloride. So it's strong relation. So a lot of energy is required. बात समझ आई? Yes. ठीक है. एनी क्वेश्चन? No, sir. चलो बेटा मेरी एक और क्लास है, ठीक है? अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज.